Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees, welcome everyone. आज का ये जो स्पेशल है कीर्तन एंड कृष्ण कथा, इसमें हम श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 37 कृष्णा बुक से. चैप्टर का टाइटल है किलिंग द केसी डीमन एंड व्योमासुर. सो आप में से काफ़ी सारे लोग हमारे साथ कंसिस्टेंटली कृष्णा बुक फॉलो कर रहे हैं. वी आर ऑल टुगेदर डूइंग श्रवण एंड कीर्तन ऑफ दिस ब्यूटिफुल commentary on Krishna by Srila Prabhupada in this Krishna book. So please join us to offer prayers and let's get started. Padmini Ekadashi ki Jai. Please share this link with friends and family and invite, encourage as many people possible. Hare Krishna. We will acknowledge the viewers in just few seconds. Let us offer prayers. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Bol, dear viewers, welcome everyone. In this most sacred month of Purushottam, the most auspicious, most wonderful, most beautiful thing we can do is we can offer prayers from our heart. So dear devotees, Ramesh Chandra ji, Varun Chhabra Prabhuji, Dheeraj Prabhuji, Vara Lakshmi ji, Bhivakar Ghoshal ji. And who else is there? Baisakhi Mataji. Hari Bol. Welcome everyone. Let's get started. Prayers हमने offer कर दी हैं, invocation prayers. Let us all join together to sing Om Namo Bhagavate Vasudevaya 3 times. और background में जो beautiful कीर्तन हम सुन रहे हैं, that is by His Holiness Niranjan Swami Maharaj. So time to time we will be singing along with him. We'll follow in his footsteps and we'll chant the holy names. We'll vibrate it on our lips. Shikha Trivedi Jan ji, Hare Krishna, Irina ji, Hari Bol, dear devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So dear devotees, हम जिस चैप्टर का श्रवण कर रहे हैं वो है चैप्टर 37 कृष्णा बुक से. अगर आपके पास कृष्णा बुक नहीं है तो आपके लिए हम लिंक शेयर करते चलेंगे. बैसाखी माता जी विल बी काइंडली शेयरिंग द लिंक एवरी 5 मिनट्स. आपके लिए हम लिंक अभी शेयर कर चुके हैं. एक बार कमेंट्स बॉक्स पे लिंक है, उस पर क्लिक करिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. हरे कृष्णा. चैप्टर की शुरुआत से पहले सब मिलकर आइए 2 बार हरे कृष्णा महामंत्र इन दिस ब्यूटीफुल मेलोडी. Dear devotees, so a beautiful kirtan, it is being led by His Holiness Niranjan Swami Maharaj. We are feeling so happy to see your comments. This chat box is made alive by your comments. So please keep chanting, please glorify the Lord and join us in Shravan and Kirtan of this chapter. So chapter number 37 की लिंक शेयर की गई है, उसे स्टार्ट करते हैं. Killing the Keśī demon एंड व्योमासुर, ये 2 डीमंस हैं. आइए देखें इनका वध कैसे होता है. पिछले चैप्टर में हमने रीड किया कि जो अक्रूर हैं उन्हें
कृष्ण के पास भेजा गया। कंस ने डिप्लोमेटिकली अक्रूर को अपनी थिंकिंग शेयर की, जिसमें मेनली ही इज़ वेरी पफ्ड अप, ही इज़ वेरी इगोइस्टिक। कंस जो है मामा हैं जो कृष्ण के। वो एक चल रहा है, एक पास टाइम चल रहा है, और साथ ही में पैरेलल में देखिए केशी डीमन और व्योमासुर का वध कैसे होता है। सो आफ्टर बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय कंस, द डीमन केशी assumed the form of a terrible horse। हॉर्स के शेप में डीमन है ये। और क्या किया उसने, वो एंटर करता है वृंदावन में, और उसकी जो गति है यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है विद द स्पीड ऑफ माइंड, एंड हिज ग्रेट मेन फ्लाइंग एंड हूव्स डिगिंग द अर्थ। बहुत ही डरावने तरीके से गया है वो, और जोर से वाइन करते हुए, टेरिफाई करते हुए, वृंदावन के पूरे वनों को हिलाते हुए, यानी लिटरली बहुत ही जोर से ध्वनि थी उसकी। जब कृष्ण ने देखा कि वो जो डीमन है केशी इतना टेरिफाइंग है, इतना डरावना है, सारे वृंदावन वासियों को भयभीत कर रहा है अपनी जोर से हिनहिनाहट से, जो कि वाइनिंग यहाँ एक्सप्लेन है, और उसकी जो टेल है व्हीलिंग इन द स्काई लाइक अ बिग क्लाउड। तो यानी इन सारे डीमंस का जो आकार था बहुत ही ह्यूज होता था। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, मोनिका माता जी, मीना सोक्रीवाल जी, हरि बोल, आपने अभी ज्वाइन किया है, दैट्स रियली वंडरफुल। वी हैव अबाउट 55 व्यूअर्स। डियर व्यूअर्स, प्लीज़ एंकरेज फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये एक बहुत ही प्यारी कथा है, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, और जैसे जैसे हम भगवान के पास टाइम्स का श्रवण करेंगे, हम रियलाइज़ करेंगे कि जस्ट बाय हियरिंग अ लॉट ऑफ प्योरिफिकेशन हैपन्स, और हमारी श्रद्धा ग्रो करती है। तो जब कृष्ण ने स्वयं देखा कि ये जो डीमन आया इस तरह से सबको डराते हुए और चैलेंज कर रहा है कृष्ण को युद्ध के लिए, तो लॉर्ड एक्सेप्टेड हिज चैलेंज, एंड उनके कृष्ण जो हैं केशी के सामने आकर खड़े हो गए। और केशी ने क्या किया, केशी ने देखा कि फाइटिंग के लिए कॉल है, तो वो हॉर्स के फॉर्म में जो डीमन था केशी, वो भागा कृष्ण की तरफ। इतना ज़ोर से उसने हॉरिबल साउंड किया, जैसे कि एक शेर, शेर की आवाज़ कैसी होती है, और उसने अपने जॉज जो थे बहुत ही वाइड ओपन स्प्रेड किए, जैसे कि पूरा का पूरा आसमान ही निकल जाएगा। तो इस तरह से केशी जब लॉर्ड की तरफ, कृष्ण की तरफ भागा ग्रेट स्पीड में, और करने की क्या कोशिश की उसने, वो तो कृष्ण का मारने आया था, राइट, ट्रैम्पल करने की कोशिश की अपनी लेग से। और लेग्स यहाँ डिस्क्राइब किए हैं श्रील प्रभुपाद ने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल एंड हार्ड एज स्टोन। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसकी लेग्स को पकड़ लिया और उसे कंफ्यूज कर दिया, बैफल कर दिया। और इस तरीके से कृष्ण, जो कि समवॉट क्रोध का पास टाइम दिखा रहे हैं, ही बिगैन टू व्हर्ल द हॉर्स अराउंड। उन्होंने उस घोड़े के फॉर्म में जो केशी आया था डीमन, उसको गोल गोल घुमाना शुरू किया, जोर से व्हर्ल करना शुरू किया। और उसके बाद फ्यू राउंड्स के बाद उन्होंने बड़े ज़ोर से, यानी कि आप जिन्होंने फिज़िक्स पढ़ी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जिन्हें आइडिया है, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बड़ी तेज़ वेलोसिटी से जब इस तरह से कोई चीज़ घुमाई जाती है, कोई ये तो चीज़ नहीं है, तो बहुत बड़ा भीमकाय बड़ा सा डीमन है, उसको जोर से कृष्ण जोर से घुमा रहे हैं, और उसको कुछ 100 यार्ड्स दूर फेंक दिया। जस्ट एज गरुड़ जो है थ्रोज अ बिग स्नेक। इस तरह से कृष्ण द्वारा फेंके जाने पर हॉर्स फॉर्म में केशी जो है वो पास आउट हो गया, बेहोश हो गया। लेकिन थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने बड़े ही क्रोध और फोर्स के साथ फिर से कृष्ण की तरफ अटैक किया विद हिज माउथ ओपन। और हुआ क्या, एज सुन एज केशी कृष्ण के पास पहुंचा, कृष्ण ने उसे पुश किया। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह पूरा वृतांत है, पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरे जो जैसे कि आप एक मूवी देख रहे हैं, और जिन्होंने कृष्णा की जो मूवी देखी होंगी, लिटिल कृष्णा, डार्लिंग ऑफ वृंदावन, उन्हें याद आ रहे होंगे ये सब एपिसोड्स कैसे ब्यूटीफुली वहाँ पर पिक्चराइज्ड हैं, इलस्ट्रेटेड हैं। तो जब कृष्ण ने उसे पुश किया अपने लेफ्ट आर्म से उसके माउथ को, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि एक बहुत बड़ा जैसे सर्प, बिग स्नेक हैड एंटर्ड अ होल इन द फील्ड। और इससे केशी को बहुत पेन हुआ, बिकॉज कृष्ण की जो बाँ थी, इट फेल्ट टू हिम लाइक हॉट आयरन रॉड। और फिर इमीडिएटली उसके दांत टूट गए, दांत गिर गए।
कृष्ण का जो आर्म था विद इन द माउथ ऑफ द हॉर्स एट वंस बिगैन टू एक्सपैंड. व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सुप्रीम लॉर्ड. भगवान सभी कुछ कर सकते हैं. तो जब उनका हैंड एक्सपैंड करने लगा, उनका आर्म एक्सपैंड करने लगा केशी के मुख में, केशी का थ्रोट चोकअप हो गया और इस तरह से घोड़े को सफोकेशन से बहुत पर्सपिरेशन आने लगा, पसीना छूटने लगा और वो घबरा के उसके हाथ पांव जो टांगे, क्योंकि एनिमल था, उसकी हिदर एंड तिदर लिम्स होने लगे और फिर उसकी आखिरी सांस पर उसकी आंखें बल्ज आउट हो गई अपने सॉकेट से. ही पास्ड स्टूल एंड यूरिन साइमल्टेनियसली और वाइटल फोर्स उसकी लाइफ का एक्सपायर हो गया. इस तरह से केशी डीमन का अंत हुआ. हिज माउथ बिकेम लूज. कृष्णा कुड एक्सट्रैक्ट हिज आर्म विदाउट डिफिकल्टी. He did not feel any surprise that Keśī demon was killed so easily. कृष्ण को सरप्राइज तनिक भी नहीं हुआ. लेकिन जो आसमान में उस वक्त कौन थे, ये सारा नज़ारा कौन देख रहे थे, जरा कमेंट में लिखकर बताएं डियर डिवोटीज, जिन्हें अब तक आइडिया पड़ चुका है कृष्ण कथा से कि जितनी बार भी कृष्ण इन डीमंस का संहार करते थे तो ऑडियंस कौन होते थे बताओ. ब्रजवासी होते थे और उसके अलावा आसमान में कौन होते थे जो पूरा का पूरा पास टाइम आई विटनेस देख रहे होते थे. और वर्षा कैसी होती थी, फूलों की. यस सखी माता जी, डेमीगॉड्स दे वर इन द स्काई. सो आउट ऑफ ग्रेट एप्रिसिएशन ये सारे जो देवी देवता हैं ये फूलों की, पुष्पों की वर्षा करने लगे, ग्लोरीफाई करते हुए. आइए थोड़ा चैंट करें एंड विल रीड फर्दर. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So, Prabhuji, would you like to continue next paragraph? Yes, Hare Krishna. Hari Bol. So after this incident, अब जब केशी demon का वध हो गया, Devashi Narad, he appears. He is the greatest of all devotees. And why has he come to Vrindavan? He has come to see Krishna in a solitary place. And he began to talk with him. Now when Devashi Narad is addressing Lord Shri Krishna, of course Lord Shri Krishna is his worshipable deity. So he's saying, my dear Lord Krishna, he says, "Sir, you are the unlimited super soul, the supreme controller of all mystic powers, the Lord of the whole universe, the all-pervading personality of Godhead." So again, we can be at one place, right? I am here, you are there. We cannot be at multiple places, but Lord can be everywhere through His Paramatma expansion, so His super soul. That's why He is referred to as omnipresent, all-pervading personality of Godhead. You are the resting place of the cosmic manifestations. So again, when we think of this cosmos, these material universes, who's supporting them? Of course, an expansion of Lord Shri Krishna, Anantashesh. So that's what is being addressed here. The master of all the devotees and the Lord of everyone. So he is the supreme personality of Godhead. He is everyone's Lord. My dear Lord, as the super soul of all living entities, you remain concealed within their hearts, exactly as fire remains concealed in every piece of fuel. Now here, fuel, we should look from the perspective that the trees, they have the wood. So they are absorbing all this solar energy and they are preserving this energy in the form of fuel. That's why they have the potency to give us fire. So that has been also reflected here. You are the witness of all the activities of the living entities, and you are the supreme controller within their hearts. So we all know that Lord Krishna is the overseer permitter in everyone's heart, and man proposes, God disposes. So he is the one who actually gives the final decision what needs to happen or what should happen. Now he is also Atmaram, so Devashi Narada is glorifying him that way too. He is saying, you are self-sufficient. Before the creation you existed, and by your energy you have created all the material elements. Now sometimes people get confused. They think that Lord Brahma is the one who has created. That is secondary creation. Who has created Lord Brahma is also Lord Vishnu. So again, we have to understand the right perspective. And the material universe in which we are, which is part of the secondary creation, was originally created from the Mahavishnu who was lying in the ocean, Karna Dakshai ocean.
According to your perfect plan, this material world is created by the interaction of the modes of nature. So this is where the time agitates the three modes of material nature, and because of that interaction, when material nature is being agitated, the three modes, they become active and various activities start to take place. And then Devashinara is saying, by you it is maintained and annihilated. So he is reflecting that Lord Krishna is the original cause, Sarvakara and Karanam. This is the cause of creation, maintenance and annihilation. And he passes on the responsibility in the secondary to his expansions of expansions. So again, Lord Brahma, who is one of the living entities, and Lord Shiva, who is a Shiva Tattva, and Lord Vishnu himself. So in the secondary creation, these are responsible for creating, maintaining and destruction or annihilation. Although you are unaffected by all these activities, you are the supreme controller eternally. So this actually reflects that when a judge in the court is making judgment, the judge is not affected when he is making a judgment. He is just following the law, he is just going through it. So Lord is transcendental to all the three modes of material nature, so he is of course not affected. While we living entities are conditioned under the three modes and we are affected. So he is the supreme controller eternally. Hare Krishna Devi, would you like to add? Yes, Prabhuji, this is so wonderful. आपने जो अभी शेयर किया, ये कृष्णा बुक के चैप्टर 37 से, डियर डिवोटीज, हम रीड कर रहे हैं सेकंड पैराग्राफ. एंड बैसाखी माता जी आप सभी के लिए रेफरेंस के लिए लिंक शेयर कर रही हैं एवरी 5 मिनट्स में, so that the new viewers who join us, they can click on the link and they can come up to the speed. And प्रभु जी ने अभी ये जो प्रेयर्स रीड आउट कर रहे हैं, प्रभु जी नारद मुनि हैं, ये केशी डिमन के वध पर उन्होंने कृष्ण को प्रेयर्स ऑफर की हैं. और ये प्रेयर्स इतनी ब्यूटीफुल हैं, जिस तरह पूरी श्रीमद् भागवतम में शास्त्रों में अलग अलग जगह अलग अलग एग्जॉल्टेड सेंटली सोल्स ने सुप्रीम लॉर्ड के लिए प्रेयर्स ऑफर की हैं. जब हम प्रेयर्स ऑफर करते हैं, स्पेशली इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में, स्पेशली आज इस पद्मिनी सुप्रीम पद्मिनी एकादशी के दिन, हमें हर अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए. एवरी चांस वी शुड मेक यूज़ ऑफ टू ऑफर प्रेयर्स टू सुप्रीम लॉर्ड. कभी कभी हमारे पास इतने एलोक्वेंट वर्ड्स नहीं होते हैं. इवन दो वी रीड सच ब्यूटिफुल प्रेयर्स इन द शास्त्रास, sometimes we can't remember or can think of how to present our prayers. Then what do? Then we follow sadhu guru and shastra. शिला प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें जो हरे कृष्णा महामंत्र रिवील किया है, उसका ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन रिवील किया है. ओ लॉर्ड कृष्णा, ओ लॉर्ड राम, ओ मदर हरे, प्लीज़ एक्सेप्ट माई लविंग सर्विस, प्लीज़ एंगेज मी इन योर लविंग डिवोशनल सर्विस. और वो क्या है प्रेयर? ये जो बैकग्राउंड में ब्यूटीफुल महामंत्र, प्लीज़ जॉइन अस एंड विल कंटिन्यू फर्दर. Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. One more time. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा. सो प्रभु जी आप कंटिन्यू करें कृपया आगे. These are such beautiful prayers, something we can reflect on, we can try to understand and cultivate this mood. And of course, Devashi Narad in his prayers, he is saying that you are the supreme controller eternally. Now this is where it is very clearly given in the Shastras that the position of the Supreme Personality of Godhead is already taken. And when Srila Prabhupada was visiting, one time he was actually asked, so how can we become God? And he said, no, you can never become God. That position is taken. We can become godly. So that is our best position. What does godly mean? That we serve the Supreme Personality of Godhead with devotion, with love,
And that's how we become godly. And when we hear about the Supreme Personality of Godhead with faith, in a loving mood, with surrender, then also it purifies us, and that is the characteristic of being godly. Hare Krishna Devi, would you like to add? Yes, Prabhuji, this is just beautiful. Further यहाँ पे mention है, my dear Lord. किसके ये words हैं? नारद मुनि. My dear Lord, you have advented yourself on the surface of this earth just to kill all the so-called kings who are actually demons. हमें पता है famous verse है. कौन सी famous है? Verse भगवत गीता की, जिसमें explained है, why does Lord advent? What is the reason Krishna incarnates? There are three main reasons. Please mention in the comments. आप में से जितने भी viewers को इसकी knowledge है, या तो वर्स मेंशन करिए, या तो वो 3 पॉइंट्स मेंशन करिए, या फिर दोनों ही मेंशन करिए. वी विल चेक इट आउट इन 2 minutes. ओके, सो आगे मेंशन है, दीज हॉबगॉब्लिन्स आर चीटिंग पीपल इन द ड्रेस ऑफ द प्रिंसली ऑर्डर. You have advented yourself to fulfill your own statement that you came within the material world just to protect the principles of religion and annihilate unwanted miscreants. My dear Lord, I am therefore sure that the day after tomorrow, I shall see demons like Chanur, Mushtika and other wrestlers and elephants. Now, why did Narad Muni say that, my dear Lord, I am therefore sure, as well as Kansa himself, I am therefore sure that day after tomorrow, I shall see all these demon names, as well as Kansa himself killed by you. Why do you think Narad Muni says this to Lord Krishna in his prayers? I shall see this with my own eyes. After this, I shall be able to see the killing of other demons. Like, who are they? Shankh, Yavan, Mura, Narkasur. I shall also see how you may take away Parijat flower from the kingdom of heaven, and how you defeat the king of heaven himself. Hare Krishna. Dear devotees, we are going to check your comments now. What are the reasons Krishna advents on the surface of earth? Why does he incarnate? And meanwhile, let us all chant together one more time. हरे कृष्णा. वरुण प्रभु, सीमा माता जी, बैसाखी माता जी, आप सभी ने रीजंस लिखे हैं. दैट्स रियली वंडरफुल. बैसाखी माता जी, कॉपी पेस्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स. ओके, सो व्हाट आर द 3 reasons? To annihilate the demons, to have loving exchanges with the devotees, and to re-establish the principles of religion. Very good. So dear devotees, आगे बढ़ते हैं. My dear Lord, so Devashi Narada is continuing to reveal. Now he is revealing what is going to happen in future. And when somebody can do that, that potency comes because of the mercy of the Lord, because of devotional service, and such person is called Trikalagya. They know about the past, present and future. So Devashi Narada is showing that potency by the mercy of the Lord. I shall then be able to see how you marry princesses, the daughters of chivalrous kings, by paying the price of Kshatriya strength. So this is where Kshatriyas are chivalrous, right? They fight and they win, and many times they have to participate in Swayamvar, and they have to compete with each other to show who is the best. So whenever a Kshatriya wants to marry a very beautiful and qualified daughter of a great king, he must fight his competitors and emerge victorious. Then he is given the hand of the princess in charity. This is Kanya Dan, right? This is a great, one of the great, charity that a father can perform by giving his daughter to a qualified boy, groom. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu ji, that's a great point. And also इसी के साथ हमें एक और wonderful information मिल रही है at this point in this Kirtan and Krishna Katha. और वो wonderful observation ये है कि Sri Narad Muni already kind of हमें glimpse दे रहे हैं for the past times which are about to happen.
सो आगे नारद मुनि के वर्ड्स हैं. श्रीला प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह ये कमेंट्री में लिखा है. I shall also see how you save King Nriga from a hellish condition, said Narad Muni. This you shall enact in Dwarka. I shall also be able to see how you get your wife and Shamantak jewel and how you save the son of Brahman from death after he has already been transferred to another planet. तो ये जो कृष्ण के सारे पास टाइम्स हैं, एक के बाद एक हम इस कृष्णा बुक में कीर्तन कृष्ण कथा प्रोग्राम में आप सभी के साथ इन्हीं पास टाइम्स का एक के बाद एक नरेशन श्रवण और कीर्तन करेंगे. उसके बाद पौंड्रा का डीमन का मेंशन है एंड किस तरह से द किंगडम ऑफ काशी विल बी बर्न टू एशेस. एंड नारद मुनि कह रहे हैं आई विल सी हाउ यू किल किंग ऑफ छेदी एंड दंत वक्र ड्यूरिंग द ग्रेट सैक्रिफाइस ऑफ महाराज युधिष्ठिर. और इस तरह से काफ़ी सारी शिवल्रस एक्टिविटीज़ फॉलो करेंगी while Krishna continues in Dwarka. और ये सारी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय योर ग्रेस. दे विल बी संग बाय ग्रेट पोएट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. हम में से काफ़ी सारे लोगों ने कृष्ण जो वैष्णव सॉन्ग बुक्स का श्रवण किया है, थॉरो रीडिंग की है, और भी बहुत सारी प्रेयर्स रीड करते हैं हम सब. सो उससे हमें यही नॉलेज मिलती है कि इतने जो वैष्णव आचार्य हैं, they are great poets, the beautiful poets they have written. And then further it's mentioned that at the battle of Kurukshetra you will take part as chariot driver of your friend Arjun and as the invincible death incarnation eternal time. So Bhagavad Gita, उसमें हम wisdom जो read करते हैं, instructions of Krishna, all different yogas, karma yoga, dhyana yoga, bhakti yoga. Right there on the battlefield of Kurukshetra, Krishna gives this knowledge to Arjun that fix your mind on my lotus feet and perform your duties. And then इस तरह से नारद मुनि जो हैं वो मेंशन कर रहे हैं अपनी प्रेयर्स में, उस सुप्रीम लॉर्ड you will vanquish all belligerents assembled there. I shall see a large number of military forces killed on that battlefield. My lord, let me offer my respectful obeisances unto your lotus feet. So what is the position of Supreme Lord? Position of Supreme Lord is he is situated completely in transcendental position, in perfect knowledge and bliss. So Narad Muni says, you are complete in fulfilling all your desires, and by exhibiting your internal potency, you have set up the influence of Maya. Your unlimited potency cannot even be measured by anyone. And my dear Lord, you are the supreme controller. Let us all never forget, dear viewers, I am just commenting on this, that let us never forget that. Who is the supreme controller? Because man proposes, God disposes. Krishna is the supreme controller. So Narad Muni ends this particular, ये जो particular paragraph है, it ends at a note which says, you are under your own internal potency and it is simply vain to think that you are dependent on any of your creations. So these are the beautiful prayers and we can just understand it, we can imbibe this mood and we can offer prayers that the Lord accepts our prayers too. Hare Krishna. Hare Krishna. So Prabhuji, please. So this is very interesting, Devi, that you just shared that Lord is under his own internal potency. So Krishna means all attractive, right? He is also known as Madan Mohan. He even attracts the Cupid, but his internal potency represented by Srimati Radharani. She even attracts Krishna. That's why she is also known as Madan Mohan Mohini. And that is what is being understood here. That he is the supreme powerful, and of course the supreme powerful will have power, and the power is Radharani. So while they have separated as two in this form of Krishna, Shishi Radha Krishna, yet at the same time they are non-different, because without power the person cannot be powerful, and a powerful person will have the power. So they are, one and the same, yet at the same time Lord Krishna is attracted. He is even under her. That's why when you go to Vrindavan, what do people say? They say, Radhe Radhe. Every street you will hear, Radhe Radhe, because Radhe Vrindavaneshwari, she is the queen of Vrindavan.
This is what we understand as devotees. When we have to approach Father, it's easier to approach through Mother. So we approach Radharani, Supreme Mother, to present our case in front of Father so that he can bestow his mercy on us. That's why Mahamantra also, when we see, starts with Mother's name, Hare. Hare means Hara. When called out with love is Hare. Just like Sita when called out with love is Sita. So we are calling out to Mother Hara to get us the mercy of our Supreme Father Lord Krishna. Now Devashi Narada is continuing to glorify Lord Shri Krishna. And here we have to understand that Lord Krishna, Acharyas reveal, never kills a demon. It is Vishnu in Krishna who kills the demon. So there are various incarnations, they are all expansions of Lord Krishna. They are present with him when he appears. You have taken birth in the Yadu dynasty or the Vrishni dynasty. So again, Lord Krishna here is being identified as Vasudev. Vasudev is son of Vasudev. Vasudeva and Devaki, they are the parents in the Yadu dynasty. Your advent on the surface of the earth in your original form of eternal blissful knowledge is your own pastime. So this is what Leelas are. When Lord, he is not under the instructions or he's been commanded by anyone. Whatever he feels like, he does that. You are not dependent on anything but yourself. Therefore I offer my respectful obeisances unto your lotus feet. After offering his respectful obeisances to Lord Krishna, Narad Muni took permission and left. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, this is really beautiful. The prayers you are reading, ये नारद मुनि's prayers हैं to the Supreme Lord after केशी demon का वध हुआ. और आगे mentioned है, Narad Muni wanted to impress upon people in general that Krishna is fully independent. Just 1 second, let me put this from the beginning. Okay. So Krishna is fully independent. His activities such as his appearance in the family of Yadu or his friendship with Arjun do not necessarily oblige him to act to enjoy their results. They are all his pastimes, and for him they are all play. But for us they are actual, tangible facts. And that is the reason we devotees, we do the Shravan and Kirtan so that we can properly visualize these pastimes and then remember, and that will happen through the grace of Guru and through the grace of the Supreme Lord. What we need to do? We need to offer prayers. We need to read these pastimes, and then we need to depend on mercy of the Lord. Dear devotees, dear viewers, please join us in these prayers. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. इससे पहले हम अगले पैराग्राफ की तरफ मूव करें. 2 things. For the new viewers, कमेंट्स में लिंक शेयर की जा रही है जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन कम टू द पॉइंट जहाँ तक हमने रीडिंग कर ली है. अबाउट 75% चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है. और दूसरी बात जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, जैसा कि ये प्रोग्राम का टाइटल है कीर्तन एंड कृष्ण कथा. कृष्ण कथा का तो हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं इस लाइव प्रोग्राम में. एंड दिस कीर्तन विच इज़ बीइंग प्लेड इन द बैकग्राउंड, ये है हरे कृष्णा महामंत्र, जिसमें 3 वर्ड्स हैं, हरे कृष्ण और राम. हरे कृष्णा महामंत्र जो है, ये चैंटिंग जो हम कर रहे हैं होली नेम्स की, ये है ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन. गोलोकेरा प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, ये इस मटेरियल वर्ल्ड का साउंड वाइब्रेशन नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का साउंड वाइब्रेशन है. दैट्स व्हाई इट इज़ ट्रांसडेंटल. और ये जो साउंड वाइब्रेशन है जब हमारे ईयर्स से एंटर करता है, यू नो, एंड देन एज वी डू द श्रवण एंड एज वी फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ साधु गुरु एंड शास्त्र, देन होता क्या है,
इस होली नेम को हम और भी श्रद्धा से चैंट करते हैं, एंड देन ये कंटिन्यू करते हैं. दिस चैंटिंग कॉन्स्टिट्यूट्स द वर्शिप ऑफ द ट्रांसडेंटल नेम. जो हरि नाम है ये ट्रांसडेंटल है, एंड इट इज़ नॉन डिफरेंट देन सुप्रीम लॉर्ड. और इस तरह से जब हम वर्शिप करते हैं, when we offer prayers and we worship the transcendental name, then होता क्या है, the holy name spreads the glories within the heart of the devotee. और इस तरह से we acquire the qualification to serve Krishna, qualification to be accepted by the Supreme Lord, qualification so that we can chant with प्योरिटी. और इस तरह से जो पाथ डिस्क्राइब्ड है हमारे शास्त्रों में, हमारे वैष्णव आचार्य की वाणी में, हमें जो विजडम मिलता है भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में, दैट द डिवोटी हु चैंट्स ही बिकम्स ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इन एक्सटेसी, एंड देन ही एक्सपीरियंसेस दैट पीस, दैट जॉय, दैट हैप्पीनेस, द लविंग अफेक्शन टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड more and more. So dear devotees, let's continue to do Shravan and Kirtan of this Krishna Katha in this Transcendental Kirtan and Krishna Katha program. Hare Krishna. Prabhuji. Hare Krishna. So after Lord Krishna had killed the Keśī demon, and remember the technique he used. He pushed his left hand in the open mouth because he was neighing very much, so his mouth was open. Pushed his hand, and then to Keśī demon felt like hot iron. Then he expanded his hands. So Keśī demon choked, his eyes bulged out, he fell down, passing urine and stool, and his life, his pran nikal gaya, jise kehte hain na, he was dead. He faced his death. And here, after killing the Keśī demon, after he was killed, Krishna, he returned to tending the cows with his friends in the forest as though nothing had happened, because it was not something very special for Krishna. But the demigods watching from the sky, they were surprised and they showered flowers. Thus Krishna is eternally engaged in his transcendental activities in Vrindavan with his friends, the cowherd boys and gopis. But sometimes he exhibits the extraordinary prowess of the Supreme Personality of Godhead by killing different types of demons. Now these demons represent various kinds of anarthas, as Srila Bhaktivinoda Thakur nicely explains in his commentary. Hare Krishna. Devi, would you like to add? Yes, Prabhuji. Now a quick question for our dear audience, dear viewers. जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आप सब मेंशन करिए इफ़ यू नो कृष्ण ने और कौन से डीमंस का संहार किया है. कुछ डीमंस के नेम्स मेंशन करिए. ऑलराइट, यू कैन मेंशन वन नेम, यू कैन मेंशन सेवरल नेम्स. हरि बोल. Hare Krishna. Let's continue. Prabhuji, we are on the last paragraph of this chapter. Hare Krishna. Later that morning, Krishna went to play with his. अब हमने केशी डीमन के वध का वृतांत, we did Shravan Kirtan. Now let's come to who is Vyomāsura. Was it Vyomāsura, Prabhuji? Yes. Yeah. So later that morning, कृष्ण उसके बाद अपने काउहर्ड बॉयज़ के साथ, गोपा बॉयज़ के साथ में गोवर्धन के हिल के पास गए. वो वहीं पे लीलाएं होती थी सारी, और वहाँ पर वो चोर सिपाही जिसे बोलते हैं ना, थीव्स एंड पुलिस का गेम इमिटेट कर रहे थे. Some of the boys became police constables and some became thieves and some took the role of lambs. Seema Mataji mentioned Putna, wonderful. Hiranyakashipu by Nirudhal Mataji, wonderful. Dear devotees, we are welcoming you to put in the comments box कृष्ण ने कौन से डीमंस का वध किया. कृपया नेम्स लिखें. तो जब गोवर्धन हिल पे कृष्ण और उनके साथ में जो गोपा बॉयज़ हैं चोर पुलिस खेल रहे हैं, और उनमें से कुछ पुलिस बने, कुछ चोर बने, और किसी ने लैम्प्स का रोल लिया, और इस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं चाइल्डहुड पास टाइम. तो अगला डीमन आया, उसका नाम है व्योमासुर, द डीमन हु फ्लाइज इन द स्काई. व्योम, स्काई. और वहाँ पर व्योम इज स्काई की हवा इज द स्काई, समथिंग लाइक दैट. ही अपीयर्ड ऑन द सीन. और वो किसका पुत्र था? माया दानव का. These demons can perform wonderful magic. बहुत सारे demons के पास बड़ा मायावी powers थे. व्योमासुर ने क्या किया? He took the part of a cowherd boy playing as a thief. और उसने क्या किया? बहुत सारे बॉयज़ को चुराया जो
लैम्प्स के रोल में थे। तो वन आफ्टर अनदर वो कुछ कुछ लड़कों को उठाकर ले गया, गोपा बॉयज़ को, और उन्हें जाकर गुफाओं में कैद कर दिया। और उन गुफाओं का जो द्वार था उसको बड़े बड़े शिलाओं से बंद कर दिया। कृष्ण तो साक्षात भगवान हैं, कृष्ण अंडरस्टैंड कर सकते थे ये डीमन का क्या ट्रिक है, इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उसको धर पकड़ा जैसे कि एक शेर पकड़ता है छोटे से लैम्प को। और वो डीमन ने बहुत कोशिश की अपने आप को एक्सपैंड कर दे, बहुत बड़े हिल के फॉर्म में, पहाड़ के समान बच के निकल जाए, लेकिन कृष्ण ने उसे बचने नहीं दिया अपने क्लचेस से, और उसको पूरे फोर्स से पटक के उसका वध कर दिया, जैसे कि स्लॉटर हाउस में एनिमल किल किया जाता है। और इस तरह से आफ्टर किलिंग व्योमा डीमन, लॉर्ड कृष्णा रिलीज्ड हिज फ्रेंड फ्रॉम द केव्स ऑफ द माउंटेन, अपने सभी गोपा बॉयज़ को रिलीज कराया। He was then praised by his friends and by the demigods for these wonderful acts. और इस तरह से सब हंसी खुशी वृंदावन गौ के साथ, ग्वाल बालों के साथ, अपने गोपा बॉयज़ के साथ वापस आए। और this ends the Bhakti Vedanta purport of 37th chapter of Krishna killing the Keśī demon and Vyomāsura. So dear devotees, ये तो और दो नए हमने अभी जो रीडिंग की डीमंस के संहार की, लेकिन एक्चुअल पास टाइम अक्रूर को भेजा गया है कृष्ण को आमंत्रण देकर मल्लयुद्ध के लिए लाने की, और जो कि फॉलोइंग चैप्टर में अब आ जाएंगे हम उस पास टाइम पे, और अक्रूर की ब्यूटीफुल प्रेयर्स भी हैं। प्लीज़ डू नॉट मिस आगे के सेक्शंस। आप में से जितने लोगों ने भी डीमंस के नेम मेंशन किए, दैट्स रियली वंडरफुल, वेरी वेरी हैप्पी टू सी योर रेस्पॉन्सेज। वरुण प्रभु, सीमा माता जी, नीरू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इससे पहले हम ये कीर्तन कृष्ण कथा प्रोग्राम को कंक्लूड करें? So many of you may be wondering, Devashi Narad just made the prayers. He talked of, the various demons, Charun, Mushtika, Kulpediya, Kamsa, all these will be killed. And then many other demons, Darkasur, and so many other demons will be killed. King Nrib, who was a great charitable king in Dwarka, Lord Krishna, he actually frees him from the from a reptile body. So these are there. Why didn't he mention Vyomāsura? So Acharya has revealed that actually Vyomāsura was not sent by Kamsa. He just was the son of Maya Danav, and he, wanted to show his prowess, and at the same time wanted, again, this is where the demons, they don't follow four regulative principles, and they, sometimes like to eat living entities. So that was his plan, and Lord Krishna completely foiled his plan by killing him and freeing his cowherd friends, boyfriends. Hare Krishna. Hare Krishna. Dear devotees, thank you so much for your responses, for joining us today. Please continue to chant Hare Krishna Mahamantra, read Srimad Bhagavatam, read Krishna book. Let us know if you have any questions. And आप में से जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमने अपनी WhatsApp contact information आपके लिए शेयर की है. Please join us in our Praying Happy Hearts groups and let us know if you need any help. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Bhagavad ki jai. Anant Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna Mahamantra ki jai. Gantra Srimad Bhagavatam ki jai. Nitai Go Premanande. Hare Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna.